Welcome friends. Today we will discuss in this video regarding multiple choice questions which are based on स्टिलाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो स्टिलाइजेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट free from living organisms including bacterial and fungal spores and viruses is known as option A pasteurization, option B antisepsis, option C disinfection and option D sterilization. And we know that pasteurization is a partial sterilization of a product like milk to make it safe for consumption and improve its keeping quality, that is pasteurization. And antisepsis, that means the destruction or inhibition of microorganisms on living tissues. And disinfection means the process that eliminates many or all pathogens or pathogenic microbes except bacterial spores on inanimate object, that means नॉन लिविंग जो सर्फेसेज होती है उन पे हम डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूज में लेते हैं। तो दैट्स व्हाई हियर द राइट आंसर इज स्टेरिलाइजेशन, यानी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट free from living organisms including bacterial and fungal spores and viruses is known as sterilization. Next question, which of the following apparatus is used to provide steam under regulated pressure? Here there is four option. Option A is autoclave, B is laminar airflow, C is incubator and D is hot air oven. Now hot air oven is the device which is basically used for dry heat sterilization. Dry heat sterilization जो उसमें हम hot air oven को use में लेते हैं. And laminar airflow is a enclosed bench basically designed to prevent contaminations in biological samples or any other sensitive materials. And incubators are basically used for the incubation of microbes or सम अदर, तो उनके लिए हम इंक्यूबेटर्स यूज में लेते हैं. बट ऑटोक्लेव जो है दैट वन इज द बेसिकली यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड हियर वी यूज द स्टीम अंडर प्रेशर. तो दैट्स व्हाई राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑटोक्लेव. विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus is used to provide steam under regulated pressure is autoclave. Now next question, a chemical agent that kills the microorganisms and is commonly applied to substances used on inanimate objects are option A antiseptics, B sanitizers, C disinfectants and D is antibiotics. Antibiotics, that means antimicrobial substances which are basically active against bacteria, and these are basically used in the treatment or prevention of infections. And sanitizer, that's we all know that these are basically like these hand sanitizers are commonly used to remove the common pathogens. And antiseptics are basically used on living tissues. So here the right answer is option C disinfectants. So disinfectants are the chemical which are used to kill the microorganism and is commonly applied to substances used on inanimate object, that is disinfectants. Now next question, question number 4, an agent that prevents the growth of bacteria are known as option A bactericide, option B bacteriostatic, option C antimicrobial and option D is antibiotic. So we all know that the एजेंट विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं, दे आर बेसिकली उनके जो है स्टैटिक वर्ड जो है एज सफिक्स जो हमेशा प्रेजेंट रहता है. दैट्स व्हाई द एजेंट्स विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो हियर राइट आंसर इज बैक्टीरियोस्टैटिक, दैट इज ऑप्शन बी. बैक्टीरिसाइडल दैट मींस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं. एंटीबायोटिक्स आर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो बेसिकली इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है. तो हियर द राइट टर्म इज बैक्टीरियोस्टैटिक, ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following articles can be sterilized in an autoclave? Option A gloves, option B culture media, option C dressing material and option D all of these. So here
The right answer is option D, all of these. Because gloves, culture media, dressing materials, these all can be sterilized in autoclave. ये सब autoclave में sterilize किए जा सकते हैं. That's why right answer is option D, all of these. Next question. Which of the following items could be sterilized by dry heat sterilization? Option A, intravenous solutions. Option B, plastic fork bags. Option C, glass pipettes. And option D is rubber gloves. And we know that basically surgical dressings, rubber items or plastic materials cannot be sterilized in hot air oven because hot air oven use extremely high temperature over several hours to destroy microbes. And intravenous solution, plastic bags, रबर ग्लव्स दे आर हीट सेंसिटिव. ये अगर हमने और हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज किए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. दैट्स व्हाई हियर द राइट आंसर इज ग्लास पिपेट्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कुड बी स्टरलाइज बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन? दैट इज ग्लास पिपेट्स. ग्लास पिपेट जो है उनको हम स्टरलाइज कर सकते हैं. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लास पिपेट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट किल एंडोस्पोर्स? ऑप्शन ए, autoclave. Option B, incineration. Option C, hot air sterilization. And option D is pasteurization. And we know that incineration is basically destruction of waste material by burning. Incineration में जो भी waste material होता है उसको burning के through destroy किया जाता है. Autoclaving and hot air oven both are the sterilizing मेथड जो बेसिकली फिजिकल स्टरलाइजिंग मेथड्स हैं और ये दे आर आल्सो किल द एंडोस्पोर्स. बट पास्चुराइजेशन जो है उसमें स्पोर्स जो है वो किल नहीं होते हैं. दैट्स व्हाई राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पास्चुराइजेशन. तो पास्चुराइजेशन डजंट किल एंडोस्पोर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. एथिलीन ऑक्साइड इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय or kill which of the following microbes? Option A, bacteria. Option B, spores. Option C, fungi. And option D, all of these. And we know that ethylene oxide is used to destroy all forms of microorganisms like bacteria, virus and fungi. And ethylene oxide is one of the most effective sterilizing agent which is available in the market. तो ये सब पे effective है. That's why right answer is all of these. तो ethylene oxide is used to destroy or kill bacteria, spore, fungi सब पे काम करती है. इसलिए option D is the right answer. Now next question. Which of the following is a limitation of the autoclave? Option A, it takes too long to sterilize. Option B, it lacks the ability to inactivate viruses. Option C, it lacks the ability to kill endospores. And option D, it will destroy heat labile materials. यहाँ हम क्या देखते हैं कि ऑप्शन ए, इट टेक टू लॉन्ग टू स्टरलाइज, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये रॉन्ग है. इट लैक्स द एबिलिटी टू इनएक्टिवेट वायरस, तो ये तो वायरस को इनएक्टिवेट करता है, तो ये भी रॉन्ग हुआ. इट लैक्स द एबिलिटी टू किल एंडोस्पोर्स, ऑटोक्लेविंग जो है इट विल kill endospores. That's why here the limitation of autoclave is option D. It will destroy heat labile materials. So right answer is option D. Next question. The optimum temperature for pasteurization is option A, 62 to 65 degree centigrade. Option B, 60 to 65 degree centigrade. Option C, 62 to 72 degree centigrade. And option D, 65 to 75 degree centigrade. So first of all, what is pasteurization? Pasteurization is a partial sterilization of a product like milk to make it safe for consumption and improve its keeping quality. इसके लिए हम क्या करते हैं, pasteurization यूज में लेते हैं. And in general 62 degree centigrade temperature for at least 30 minutes और 72 degree centigrade for at least 15 seconds जो है pasteurization में टेम्परेचर की कंडीशन जो है वो मेंटेन की जाती है. That's why right answer is option C. The optimum temperature for pasteurization is 62 to 72 degree centigrade. आप लोगों को वीडियो में
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन समझ में आएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स।